Assalamu alaikum, this is Dr. Syed Sajjad Hussain Rizvi. In this lecture, we will learn about the software part of computer systems. In previous lectures, हमने chapter 1 के अंदर बात की about the basic fundamentals of a computer systems. Chapter 2 में हमने बात की about the internet communication. Chapter 3 और 4 में हमने input output devices के हवाले से बात की कि किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, उनकी टाइप्स क्या होंगी, इसके ऊपर बात की। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने 5 और 6 के अंदर हमने इन डेप्थ कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखा कि किस तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर प्रोसेसर काम करता है, किस तरह से वो फैचिंग करता है। हमने 5 को और 6 को बहुत डेप्थ में देखा। 6 में हमने स्पेसिफिकली देखा हमारे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के साथ। ये पूरा हमने हार्डवेयर का पार्ट कवर किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ इट। इन द कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइमरली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं ये बात कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। In any computer system, we have 2 types of software. One is called the system software, or is it also called as the operating system. Another one is the application software, जिसको हम आम ज़बान में सॉफ्टवेयर एप्स कहते हैं। अब हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, बेसिक रोल क्या हैं, किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी हैं और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। टू बिगिन विद, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू कैरी आउट 4 बेसिक ऑपरेशंस। फर्स्ट इज़ प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस। ये यूज़र को वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एंड्रॉयड ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपनी कमांड्स, अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिकॉज वी कैन नॉट रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अपनी कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल किए बगैर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम नहीं कर सकता, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन ऐप, इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, and Windows is a operating system, like Android is a sort of an operating system. Typically we called it a firmware. Firmware और operating system में फ़र्क ये है कि firmware is also a type of operating system, but it is specifically designed or developed for the embedded systems, for the stand-alone hardware. So a second role of an operating system, it provides a platform for the application software to run. Operating system is also responsible to handle all the input output hardware, storage hardware. The hardware management, hardware scheduling is also the responsibility of an operating system. It also responsible for file management, for storage management is another responsibility of an operating system. So as a summary, we can say that an operating system provides user interface, it provides platform to the application software to run, it manages the hardware, and it manages the file system, it manages the storage. An operating system could be of various type, like an operating system could be a real-time operating system. It is usually for built-in into the devices, like firmware is a sort of a real-time operating system. Medical devices, the handheld devices, the embedded systems, they have a real-time operating system. It is very fast in response and very quick in terms of the user input. Then we have 4 basic combination: single user, single tasking, single user, multitasking, multi user, multitasking. ये 4 हमें टाइप मिलेंगी। एक रियल टाइम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसमें एक यूज़र ही उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, यानी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगी। इसकी एग्जांपल आपको मिलती है माइक्रोसॉफ्ट डॉस।
जिसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होती है। दूसरा आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ एक्सपी के अंदर वी हैव अ सिंगल यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम एट अ टाइम बट इट परफॉर्म मल्टीपल टास्किंग, यानी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अगर आप विंडोज़ के टास्क मैनेजर में जाएंगे तो विंडोज़ में आपको बैकग्राउंड पे बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ एग्जीक्यूट होते हुए नज़र आएंगे। फिर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली हम यूज़ करते हैं सर्वर्स के लिए, जिसमें हमारे पास यूनिक्स है, लिनक्स है, वर्चुअल मशीन्स हैं, वीएम्स जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मशीन सिस्टम्स हमारे पास हैं। इनमें वी कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ यूज़र्स कनेक्टेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट कैन ऑब्वियसली परफॉर्म मल्टीटास्किंग। Pictorially, it is like this is a computer having a multi-user, multitasking operating system, and two users are accessing this system concurrently. We also use this system in servers and workstations and the supercomputers, because जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि workstations, servers, supercomputers, multiple users are interacting with the system, with the server at a same amount of time. An operating system must provide a user interface, जिसके ऊपर हमने बात की. A user interface could be GUI or a graphical user interface. That means it must have some buttons, some radio buttons, some checkbox, some text boxes, some scroll bars. These are the components that provide the user interface, and we by using mouse we can interact with the system. जैसे हमारे पास Windows is a GUI based operating system. Like it has menus, buttons, icons, scroll bars, text box, combo box, etc. Another type of a user interface is CLI, command line interface. Like DOS is a command line interface where we use to provide instruction to the operating system by using commands. Like for example, this is a DOS screen. If I just simply type command on it, there is no menus, buttons, and combo boxes, check boxes, or text boxes are there. All I need to do is to write a command for it. An operating system provide a platform for running the application, जैसे कि हमने पहले बात की. Another main responsibility of an operating system is to manage the hardware. It controls the hardware, all the devices that are associated with the computer systems. एक और हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी कि इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स एंड द फोल्डर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनेजमेंट. सो अगर हम इसको एज ए समरी की फॉर्म में कहें, हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट हैज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिस्टम टू रन. अ सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इन टू क्लासेस: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर हम उसको डिवाइड कर देते हैं इन अ फॉर्म कि उसका यूज़र इंटरफेस के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो एक GUI बेस होंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें मेन्यूज़, बटन्स, कॉम्बो बॉक्सेस होंगे. एक CLI बेस होंगे, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, जहां यू नीड टू राइट द कमांड्स. एक्सेस के हवाले से बात करें तो रियल टाइम एक्सेस होंगे, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क, एंड मल्टी यूज़र मल्टीटास्क. इसके अलावा हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनेजमेंट, memory management, it provides user interface, and it provides a platform for the application system to run. Now in the subsequent part of this video we will learn about the application software. जैसे कि हमने पहले बात की कि application software is designed for a specific application. For example, Microsoft media player is application software. वो सिर्फ media player का काम करेगा. इसी तरह जिस तरह से Microsoft Office, Microsoft Word is application software, Messenger is application software, Browser is application software. ये तमाम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी एक ख़ास एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, आईओ मैनेजमेंट भी कर रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी कर रहा है, यूज़र इंटरफेस भी दे रहा है, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए. बट इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी नीड टू डिज़ाइन इट थ्रू
one we need to devise it for one unit application. A software could be a commercial software, यानी that could be used for commercial purpose. ये licensed softwares हैं. Some of them are shareware. Shareware means कि आप buy करने से पहले you can try it for some time, आपको trial period मिलता है. सॉफ्टवेयर में भी डीएक्टिवेटेड अगर वो परचेज़ ना किया जाए. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर में आते हैं, यानी दे आर स्टैंड अलोन प्रोडक्ट. Software suites is available, means integrated tools inside a software is available. For example, Microsoft MS Office is a commercial software. Like for example, 3D Studio Max is a commercial software. MATLAB is a commercial software. If you want to use these softwares, technically you need to purchase a license for it. You need to purchase a software for it. Though some of them are shareware. Shareware means that they are providing you the trial period, the trial version of the software for some time or for some activities, और आगे चल के फिर आपको वो परचेज़ करना पड़ता है. A software could be a freeware software. इसमें कोई obligations नहीं होती परचेज़ करने के लिए. All it needs a registration, यानी आप सिर्फ रजिस्टर करें and you can use that software. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको WinZip या एक्सट्रैक्टर्स आपको मिलते हैं, या आपको plugins मिलते हैं. They all are freeware. There is no need to purchase a license for it. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर दो सॉफ्टवेयर्स जिसमें ना सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है बल्कि उसके साथ उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है. जैसे हम गूगल को कहते हैं कि गूगल इज़ अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, कि इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की code.google के ऊपर आप जाएं तो वहाँ पे आपको इसकी कोड रेफरेंस, इसकी APIs अवेलेबल होती हैं. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें से कुछ मैं यहाँ डिस्कस करूँगा. मीडिया प्लेयर्स, ऑल द मीडिया प्लेयर्स आर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. Architectural softwares are application software. Computing softwares are application softwares. Word processing softwares are application software. Programming language editors are the application software. So we have the large number of variety of the application software. मोबाइल लेवल पे अगर आप एम्बेडेड सिस्टम के लिए बात करें तो आपका जो एंड्रॉयड है इट इज़ एक्चुअली योर ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसके बाद जितनी भी ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं, आप करीम की ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप फेसबुक की ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप स्पीड टेस्ट की ऐप इंस्टॉल करते हैं, दी ऑल ऐप्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सम ऑफ देम आर शेयरवेयर, सम ऑफ देम आर फ्रीवेयर एंड सम ऑफ देम आर लाइसेंस्ड. सो दिस कंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने बात की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने टाइप्स के ऊपर बात की और हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप के ऊपर बात की. Thank you.